अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका तंज विदा कर देंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद कलमे से है और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसके खातिर हम जिंदगी में हैं, जिसकी उम्मत में है, अगर उसके लिए कोई गलत चीज करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक कंट्री का राष्ट्रपति बात करते हैं, फ्रांस के लोग, फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि ये बिल्डिंग पे जो कार्टून दिखाया गया वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। Let's go across to my colleague Anuj now joining us live with more on this. Anuj, this is not the first time we are seeing how AMU students have openly in a way threatened in this manner. But the shocking tape has surfaced from the Aligarh Muslim University in which a student leader is clearly seen and heard issuing open threats to behead. Oh, well, exactly. This is not the first time when we are seeing these kind of controversial statements coming in from ANU. And if we'll go through the bio of Farhan, then this is clearly mentioned over there that he is the cabinet member of AMUSU. That's Aligarh Muslim Student Union. So yes, again pointing it out, this is not the first time when such kind of controversial remark is coming out from Aligarh Muslim University. This is to wait and watch. This is to see whether Aligarh Muslim University, at least this time, when such kind of open threat is coming out, when such kind of open threat from the student is coming out, when he's making it very much clearly and threatening it very openly to behead someone, whether the Aligarh Muslim University is going to take any action on the same. Because earlier also we have seen the department, the administration also defending and coming in like the favor of the students there, and whosoever is coming out with these kind of controversial statement. But this is to wait and watch what exactly will be the next step of the administration. On the other hand, this is also to be mentioned and have to be kept in mind that this is important to take suo moto, rather it will be taken by the Uttar Pradesh administration or by the Aligarh Muslim, Aligarh, I beg your pardon, Aligarh district administration, what exactly will be next. But such kind of threat being given on the public platform, being given on the social media and on the public domain is making it very much clear that what kind exactly the mindset these kind of people is having there in Aligarh Muslim University. So this is something that need to be taken care of, and this is something that need to be stopped, so that this may be very much clear that this is an organization. This is Aligarh Muslim University for the student. People from across the country used to go there, used to come there to study. But such kind of people, such kind of... Stay with us. This comes amid also we are seeing how the centre has maintained its stand, that they stand with the French country on this entire debate of the Islamist terror attacks in France. We listen in to several reactions coming in. अब आप इसी भाषा से समझ लीजिए, वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये लोग सड़कों पे दिखा भी रहे हैं। अभी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी दिल्ली में एक बच्चे को दौड़ा करके एक कम्युनिटी के लोगों ने मार डाला। इसके पहले अभी हरियाणा में एक बेटी को खींच करके गोली मार दी। ये जो मानसिकता है ना, ये लोग यही मानसिकता बना रहे हैं। इनके लिए संविधान कुछ नहीं है, न्याय कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को, ये तो चुनाव है, लेकिन ऐसे लोगों को ये देश सबक सिखाएगा और देश का कानून सबक सिखाएगा। ऐसे जो देशद्रोह लोग हैं, जो आतंकवादियों, उग्रवादियों को, हिंसक तत्वों को साथ देते रहे हैं, ऐसे ही लोग राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और इसलिए जनता इनको सबक सिखाएगी। और जो लोग हिंसा और अपराध की बात करते हैं, ऐसे लोगों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती, उनको नक्कार खाने में भेजने का काम करेगी। गर्दन कोई काट दे, यह गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन कोई किसी कम्युनिटी का खुलकर सीधे विरोध करे, यह भी गलत है। दोनों गलत है।